Hello, my dear students and teachers. Welcome to my YouTube channel. Today, I am going to tell you about sixth program for the practical file of class 12th in data visualization. This is also to draw the histogram, but in this problem, we are going to draw a vertical histogram as well as horizontal histogram. So let us see how to draw it through code. Now, problem is given below are the sugar levels for men and women in a city. Compare the sugar level amongst them. Men के sugar level की reading दी हुई है and there are number of women also with this sugar level reading. Might be fasting, might be PP. So it is 113, 85, 90. It is fasting only. And 67, 98, it is also fasting. For how many data are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. So for 13 men and 13 women, it is recorded the sugar level of their fasting. Now let us compare this through histogram. This is the code to compare sugar level amongst men and women through histogram. Imported the matplotlib.pyplot as plt. Sugar underscore men, one list of values for a reading of fasting sugar for men, and this is reading of fasting sugar of women in two different lists, sugar underscore men, sugar underscore women. plt.x level, I have written sugar range. एक्स एक्सिस पर शुगर की रेंज दिखेगी इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स. plt डॉट वाई लेवल, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स इन दैट रेंज ऑफ शुगर. और जो एक्स एक्सिस पर आप रेंजेस दिखा रहे हैं इंटरवल के साथ, क्लास इंटरवल के साथ, उसमें वाई लेवल पर हाउ मेनी पेशेंट्स लाई इन दैट इंटरवल, that is the frequency you can say, that is representing number of patient. Then title, ब्लड शुगर एनालिसिस, कलर इज गिवन. अब हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर ध्यान से देखें. प्लॉट डॉट हिस्ट एक लिस्ट दिया है आपको जो दो डेटा के बीच में आप कंपेयर करना चाहते हैं. इफ यू वांट टू कंपेयर यू हैव टू गिव टू डेटा सेट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट. यानी कि लिस्ट पहले से ही है शुगरमैन, और ये जो आपने लिस्ट के फॉर्म में दिया वो नेस्टेड लिस्ट हो गया. शुगरमैन कॉमा शुगर विमेन दोनों लिस्ट हैं, तो लिस्ट के अंदर लिस्ट यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज किया जा रहा है. दैट मीन्स इट इज बीइंग गिवन इन द फॉर्म ऑफ नेस्टेड लिस्ट. बिन्स आपने बनाई है 80 टू 100, 100 टू 25, 25 125 टू 150. चार, दैट इज 1 2 3, थ्री रेंजेस आपने बना रखी हैं बिकॉज इसमें मिनिमम जो है वो क्या है 67 है, 98 है, 82 है. ओके. देयर आफ्टर आर विड्थ क्या है, ये 0.90 लिया है मैंने जो विड्थ ऑफ द बार, क्योंकि एक ही पॉइंट पर दो बार स्टैंड करने हैं, एक पॉइंट पर एक इंटरवल पर, तो उस इंटरवल को डिवाइड किया है, 0.90 कर दिया है उसका विड्थ ऑफ द बार. सो उसमें दो बार अकोमोडेट होने चाहिए उस इंटरवल में, यानी कि 80 टू 100 20 पॉइंट है, उसके बीच में दो बार खड़ा करने के लिए थोड़ा सा इसको कंप्रेस किया गया है. कलर, one bar will be in the form in color green and another will be in orange color. Label men women, this label in any plot, maybe bar, maybe histogram, maybe a line, उसमें ये लेवल जो डाले जाते हैं दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ लेजेंड्स, सो दैट मेन किस कलर का आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विमेन की रीडिंग किस कलर की रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट शुड बी क्लियरली विजिबल टू द स्टूडेंट्स or viewers. plt.legend, legend will be shown because there are two bars on each interval standing. Okay, so that is why legend has to be shown so that it can compare about the sugar level of men and women. plt.show, let us see the graph how it is being displayed. And this is the graph of that. दिस इज द रिजल्ट. तीन बीन्स मैंने आपको कह रहा था मैं कि 80 और 100 के बीच में ये बीन्स हैं, और ये
100 एंड 120 के बीच में थोड़ा लेफ्ट राइट हो रहा है, एंड देन 130 टू 150. Okay, 120 to 150, whatever ranges we have defined, that you can see here. Ranges are 80 to 100, 100 to 125, and 125 to 150. So that is why 80 to 100, 100 to 125, यहाँ तक 25 है, 125 to 150, right? 125 to 150. So according to your data, this is the sugar range. X level पर axis आ गया, I mean this heading आ गई, title of X axis, title of Y axis, total number of patients, showing that 80 से 90 के बीच में men जो है वो 6 हैं, women जो है वो 4 हैं. Similarly 100 to 125 के बीच में there are 2 men and number of women are more, that is 4. Similarly this is being compared on third point, that is 125 और से लेकर के 150 के बीच में जो sugar reading है. तो so this is the first one. This is the second one. Horizontal I mean histogram can also be drawn for the same purpose. I have drawn the horizontal histogram. What changes are required to be done in this? Let us see. Second program. Only whatever heading, I mean x axis title जो दिया था उसको y axis title कर दिया sugar range, और जो y axis का y level था that has been changed to x level, that is total number of patients will be shown on x axis now. PLT dot title is same and the rest of the things are similar. Orientation यहाँ पर एक नया लिया है आपने, एक new parameter orientation equal to horizontal. This has to be given. So horizontal histogram will be drawn. PLT dot legend, PLT dot show, and rest of the things are similar as previous program. As I told you, here comparison of two lists are being done. So data में आपने सबसे पहले nested list दे दी है, sugar men, sugar women, और ये list के form में है, and that too was already in the form of list, so it has become nested list. Bins आपने define कर दिया है, R width define किया हुआ है, okay, then color has been defined, then label men women, and one more parameter, one more argument, that is orientation equal to horizontal for drawing the horizontal histogram. Rest legend has to be shown and the diagram has to be shown. You can this view this diagram as usual. अभी sugar range यहाँ पर था तो हमने इसको y level बदल दिया, and this was total number of patient on y-axis, so this has been changed on x-axis. It is being shown, legend is being shown as it is, graph title is being shown as it is, there is no difference. This is how we can the view of the orientation has been changed into horizontal. I mean it was vertical and it is horizontal, you can see. So that's all about these two types of histograms representing two bars, plotting two bars on the same point, same interval, and comparing two sets of data for men and women, sugar reading, fasting. So that's all about this video. If you have understood this video, please like, share and subscribe with your friends also, so that they can also be benefited with this video, and like the channel also. Thank you for watching. Thank you.